Hi everyone. Very good evening to all of you, and wishing you all a happy new year. So I want to welcome all of you to this session. That is the session on FYERS Journal. So आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे कि ये जो नया वाला प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं, जो है FYERS जर्नल, ये किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन बिकम अ मच बेटर ट्रेडर विद द हेल्प ऑफ FYERS जर्नल. So, as we begin this session, a big shout out to the tech team here at FYERS. We believe that we have not only launched a journal that is able to compete in the markets, but we have succeeded in launching what we believe to be the country's best trading diary and journal at the moment. So, with all that said and done, हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि how we as traders can get started with this great feature that is available for all of us, and we will take you through a small walk. We will take you on a very small walkthrough as to how you can get started with this particular tool. So, without further ado, let's take a very quick demo of FYERS Journal. So, आप लोगों को पहले fires.in पे आना पड़ेगा और आने के बाद आपको यहाँ पे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा. And over here, you can click on the button, and this is where all of you access FYERS Web, FYERS One desktop platforms, and so on. So go to the wellness section right over here, or you can even scroll down, and यहाँ पे आपको FYERS Journal का option मिल जाता है. So you can click on FYERS Journal, and as soon as you do that, you will be taken to this particular domain, that is FYERS. Sorry, that is journal.fyers.in. So यहाँ पे, as you can see, I've placed only one order in 2024. So what we will do is we will go to the year 2023 and explore how the journal appears to be in this demo account. So what you can see on the screen is how a journal will actually appear to you. So journal is a feature जहां पे आपका जो भी ट्रेड्स है ये लॉग होता है, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो आप मेंटेन करते हैं, चाहे वो नेगेटिव लॉसेस डेज हो जाए, प्रॉफिटेबल डेज हो जाए, सबको एक ही जगह में कोलेट करके हम लोग आपको दिखा देते हैं कि आपका कितने प्रॉफिटेबल डेज हैं, कितने लॉस मेकिंग डेज हैं, और डिग्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होते हैं. For example, there could be some days where you're really profitable. There are some days where you can make significant losses, but all of that needs to be tracked and well maintained. So, as you can see on the screen, यहाँ पे पहले हम लोग नीचे चले जाते हैं. मिनिमम लॉस और मैक्सिमम लॉस का यहाँ पे आपको एक रेंज दिया हुआ है. तो एज यू कैन सी, from mild red, it is becoming a high degree of red. Similarly, minimum profit to maximum profit से light green से dark green बन रहा है. तो this is the gradient that we are using to showcase your profitability. So as you can see here, this is a calendar view of the year 2023. So इस पर्टिकुलर व्यू में आपको हर एक महीने का जिस जिस दिन पे भी आपने कोई भी ट्रेड लिया हुआ है, तो उस दिन का लॉग एक कलर में आपको रहता है. फॉर एग्जाम्पल, let us take the month of July, right? So you can see one green over here, two greens over here, three greens, and then four greens. And then you can see a couple of reds marked, right? So now, if you see a light green, simple तरीके से हम लोग समझ लेते हैं. If you see a light green, that means relatively आपका जो भी losses है वो उस दिन कम हुआ है. And if you see a dark green, उस दिन आपका losses जो है वो बढ़ चुका है. Now, there are some traders जो एक दिन में their P&L fluctuates by 15,000, 20,000, 30,000 and so on. There are some traders जिनका P&L 1,000 रुपीस में फ्लक्चुएट होता है. तो अगर आपका पूरा मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होता है 3,000 रुपीस के आसपास, तो आपका जो डार्क ग्रीन और डार्क रेड है ये 3,000 रुपीस के आसपास रहता है. अगर आप बड़े ट्रेडर हैं और आप दिन में मतलब आपका जो P&L फ्लक्चुएशन होता है वो 20,000 प्लस 20,000 माइनस वैसे होता है, तो द डार्क ग्रीन एंड डार्क रेड विल बी रिजर्व फॉर दैट. एंड उससे कम जो भी लॉसेस होते हैं तो उनका ग्रेडियंस जो है कम हो जाता है. तो let us take the month of July as a very small example. Let us try to understand कि gradients को किस तरीके से हम समझ सकते हैं. So what I'm going to do now is I'm going to move my mouse over to the 7th.
तो 7th अगर आप देख रहे हैं तो 7th आपको डेट वहां पे हाईलाइट हुआ है, जुलाई, दैट इज फ्राइडे, एंड यहाँ पे आपको प्लस 189 रुपीज बोल के दिख रहा है, विच इज अ सैंपल ट्रेड. सो नाउ इफ यू गो टू अ रेड डे, फॉर एग्जाम्पल 12th, आपको यहाँ पे दिख रहा है -66 रुपीज. लेकिन दीज टू आर, एज यू कैन सी हियर, मिनिमम लॉस एंड मिनिमम प्रॉफिट. तो जो डार्क ग्रीन है इसके ऊपर अगर हम होवर कर रहे हैं, that is, you can see the date as 18th of July, that is Tuesday, the profit was significantly higher at around 9,000 rupees, in and around 9,000 rupees, जो आपको वहां पे दिख रहा है as 9.29k. So the next day, if I hover over my mouse to the 19th of July, that is Wednesday, you can see that my maximum loss is very high, which is around minus 5.97k. So this is my trading range. For example, this is a demo that we are showing you. So if your trading range fluctuates between, let us say, up to 10,000 rupees. So 10,000 rupees के आसपास जो भी नंबर से, चाहे पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है या ग्रेडियंट्स होता है, डार्क ग्रीन्स, उस तरीके के डेज को रिजर्व हो जाता है. और एंड बिलो दैट विल बी द छोटे वाले डेज. सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं -167 रुपीज, -50 रुपीज, -103 रुपीज, एंड सो ऑन, विच इज like very minimal losses. So similarly, if I come to August over here and hover my mouse around, for example, let us say I hover my mouse around 16th, that is August on Wednesday. So यहाँ पे, as you can see, the losses are significantly high, which is marked in red, which is about -9k. So यहाँ पे जैसे +9k हुआ था, यहाँ पे -9k का हो रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रेड कलर को उस पे डेसिग्नेट किया गया है एज द हाईएस्ट डार्क ग्रीन. Now, if I hover over my mouse to first, you can see here that this is a very dark green, which means that it was a very profitable day, which is somewhere around plus 12,700. So this is how the journal has been designed. Now, what is the purpose of this journal? वहां से start करते हैं इस particular discussion. The purpose is not to just see which days were profitable and which days were loss making. We need to have a learning out of it, right? To become better traders, we need to learn from our own mistakes. So what we have done is we have gone above and beyond, just showing you an overview कि आपके अकाउंट में क्या होता है. ये आपका डिजिटल डायरी है. तो अभी हम लोग समझते हैं कि डिजिटल डायरी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. So now let me start off with, for example, July. Okay, let me go back to the same date, that is 18th. Now if I click on 18th, right, so I will be presented with all the trades that we have managed to take on that particular day. So जो भी trades हमने लिया था, हर एक trade का log यहाँ पे रहता है. As you can see here, BL was a trade that was taken, that was an intraday order. You can see the traded quantity, you can see the traded price and the status, that is whether it was filled or not. Similarly, a BL put was taken and you can see that the order was rejected. Then we have CSC and so on. And if we scroll down even further, we can see all the other trades that were taken. For example, HDFC Bank, it was an intraday order and we had taken 10 shares. So similarly, if we can see here, FinNifty put options were taken. And if we can scroll down, we'll be able to see a lot of other orders. For example, CSC is another order that you can see here, which was a sell order of 600 shares. So we will be able to see all the trades that we have taken. Lekin, this was a day where we made a profit. And surely, profit हुआ है किसी वजह से, right? Because a strategy worked out, या जो भी हम लोग सोच रहे थे, it has worked out. तो हमको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि what is the strategy that we followed and why did it work and why should we document it? क्योंकि आप सभी ट्रेडर्स हैं, आप लोग जानते हैं कि जो भी 3 महीने पहले आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, शायद वही वाला स्ट्रेटेजी आप आज फॉलो नहीं कर रहे हैं. और इसका वजह यह है कि हम लोग उस स्ट्रेटेजी को भूल भी जाते हैं विथ टाइम. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोग खुद फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से बैक टू बैक लॉसेस हो जाते हैं और हम निकल जाते हैं मार्केट से. लेकिन अगर हम लास्ट 6 महीने में जो भी कर रहे थे, इफ वी हैड डॉक्यूमेंटेड इट प्रॉपरली कि कौन सा वाला स्ट्रेटेजी पे हम लोग प्रॉफिट बना रहे थे, किस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे, लॉस किस वजह से हुआ वगैरह, तो हम कभी भी वापस जाके उसी दिन को देख सकते हैं कि कौन, मतलब what are the learnings from it. So now
that I've clicked on Tuesday and I know all the trades that I've taken here. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नोट लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी एक डायरी जैसा हम लोग लिख सकते हैं. तो उसको करने के लिए पहले हमको यहाँ पे ऐड नोट पे आना पड़ेगा. इफ वी क्लिक ऑन ऐड नोट हियर, then though it will allow us to start taking notes. For example, if we go to title, यहाँ पे आप टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं. For example, let us say we want to write a note for the entire day कि हमने क्या किया था. Let us say we followed an indicator strategy. So in this यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा indicator strategy RSI bullish trading ऐसे बोल के. So tags माने you can write hashtags यहाँ पे. Hashtags की similar tags यहाँ पे आप दे सकते हैं. For example, in this particular day, I traded Fin Nifty options, right? So यहाँ पे मैं Fin Nifty लगा के I can click on space and एक tag मेरा बन गया. दूसरा वाला options क्या था मैंने, so options बोल के एक tag लगा. आपको जो भी वर्ड चाहिए आप उस टैग को क्रिएट कर सकते हैं. हम लोग बाद में समझा देंगे कि टैग्स हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं और उसको ढूंढना कैसे है बाद में. लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि कोई भी वर्ड को आप एक टैग बना सकते हैं और इसका पर्पस है एक जो हम समझा देते हैं. सो फिन निफ्टी हो गया, ऑप्शंस हो गया. तो आई कैन इवन मेंशन समथिंग लाइक RSI because I used RSI indicator to make this happen, right? And let us say I've used support and resistance lines to come to a conclusion. So I will put support and resistance. ऐसे multiple tags दे. तो टैग्स देने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उस दिन का जो भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है तो उस ट्रेड का पर्पस क्या था और किस तरीके से मैंने क्या सोच समझ के मैंने उस पर्टिकुलर ट्रेड को लिया था. सो हियर आई कैन पुट समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल, आपको जो चाहिए आप लगा सकते हो उस पर. तो आई विल से दैट दिस प्रॉफिटेबल डे was a result of me trading using bullish RSI signals. I had also taken into account that the overall market trend was bullish. तो ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट्स भी लगा सकता हूँ. नेक्स्ट जाके आई कैन जस्ट राइट अ बुलेट पॉइंट. इफ आई क्लिक ऑन डैश एंड इफ आई क्लिक ऑन स्पेस एक बुलेट पॉइंट बन जाता है. सो आई कैन राइट इन द बुलेट पॉइंट दैट Fin Nifty trades worked out well. Cash trades worked out well. Cash or equity, whatever you want to call it, right? तो इसको लगाने के बाद ऐसे यहाँ पे मल्टीपल नोट्स में लगा सकता हूँ, यानी सॉरी मल्टीपल एंट्री में कर सकता हूँ. सो करने के बाद एज ट्रेडर्स इतना ही काफी नहीं होता है, राइट? एज ट्रेडर्स वी नीड रेफरेंस पॉइंट्स. तो अभी we have also enabled you to be able to upload screenshots of your trades, to upload PDFs. अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ के आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उस रिसर्च आर्टिकल को भी आप PDF में अपलोड फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं. चाहे JPG इमेजेस हो जाए, PNG इमेजेस हो जाए, JPEG हो जाए, कोई भी हो जाए, आप उसको अपलोड करना यहाँ पे चालू कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे प्लस बटन को क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाउनलोड फोल्डर से डाउनलोड फोल्डर खुल जाता है. तो एज यू कैन सी हियर आई हैव पुट अ निफ्टी स्क्रीनशॉट. तो आई विल अपलोड द स्क्रीनशॉट राइट ओवर हियर एंड द स्क्रीनशॉट हैज बीन अपलोडेड, राइट? सो ऐसे आप मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं या एक PDF क्रिएट करके पूरा PDF को आप लगा सकते हैं वहां पे. सो देयर इज अनदर पर्पस ऑफ दिस. What you can also do is, I hope everybody is aware, when you go to FYERS Web, right? It is one of the few platforms जहां पे आप directly screenshots ले सकते हैं. For example, let us say I took a trade on Nifty today. Just an example. Let us say on a 5 minutes time frame, and let us say I had taken the trade by looking at support lines or resistance lines or something. Let us say I had taken a short trade here. So यहाँ पे मैं I can put a short marker. For example, yeah. So let's say I had taken a trade right over here. I can do this and
I can go to the right side and click on this camera button. So if I click on the camera button, it will give me an option to download the image. I can click on the download image option and the image will be downloaded. So whenever I've taken a trade, I can do whatever I want with it on the chart in terms of how I want to depict the trade taken. और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट, जो भी मैं ट्रेड लिया हूं उसका स्क्रीनशॉट में डाउनलोड करके I can go to the journal, click on the plus button and click on whatever we have uploaded or downloaded, right? So इसको करने के बाद we will be able to put in multiple images into this particular diary. So अभी मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट करना था मुझे एज ए ट्रेडर, मैं अभी डॉक्यूमेंट कर चुका हूं. तो डॉक्यूमेंट करने के बाद और छोटा सा और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है. फॉर एग्जांपल, इफ इट्स अ प्रॉफिटेबल डे, you can mark a happy face there just to remind yourself that it was a profitable day. If you don't want, you can remove it. I personally don't want to put it, but a lot of other traders do use it. So if you want to, for example, mark something in bold, you can mark that in bold, as you can see right over here. So इसको करने के बाद हम लोग डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं. और अगर हम उसको डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं तो पूरा डे के लिए वो एक वाला नोट रहेगा. लेकिन let us say I want to attach this note to certain trades only. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेड्स ले चुका हूं मैं, राइट? लेकिन मैं इसको लगाना चाहता हूं सिर्फ फिन निफ्टी ट्रेड्स पे और सर्टेन कैश ट्रेड्स पे. तो यहाँ पे मैं टैग्स में जाऊंगा और कोई भी टैग मतलब यहाँ पे लगा लूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल पुट BL एज अ टैग एंड आई विल पुट CSE एज अ टैग बिकॉज दीज आर द टू स्टॉक्स दैट आई चोज, राइट? तो इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड्स को भी टैग कर सकता. सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फिन निफ्टी एंड आई वांट टू टैग माय CSE ट्रेड एज वेल एज माय BEL ट्रेड, यहां पे जाके मैं BEL को क्लिक करूंगा, CSE को क्लिक करूंगा एंड फिन निफ्टी को चुन लूंगा मैं यहां से. सो वंस आई क्लिक ऑन ऑल दीज थिंग्स, this particular note will be attached to those trades that we have taken, right? So now I can click on submit. So submit click करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूसडे पे जो भी मैंने एंट्री किया है मेरा खुद के जर्नल में, वो यहाँ पे आपको सेव हो जाता है. So now you can always click on this and you can click on, once you click on this, on the right side छोटा सा आपको दिख जाएगा कि what are the tags, what are the trades that have been tagged, and you will also be able to see a brief write-up. लेकिन अगर आपको डिटेल्ड राइटअप चाहिए तो यहाँ पे आप एक्सपैंड बटन को क्लिक कर सकते हैं एंड एक ब्लॉग जैसे खुल जाता है जहां पे आप अपने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा और उसके नीचे जो भी हम लोग स्क्रीनशॉट्स डाल चुके हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो इसको आप एक रेफरेंस पॉइंट्स जैसे रख सकते हैं एंड कभी भी रिविजिट कर सकते हैं. So there is no restriction on the amount of notes that you can add for a day. You can go ahead and feel free to add as many notes as you want. For example, if you want to write another note, you can click on add note and type another note. For example, I'll just put XYZ here, tags as, for example, MACD indicator and price action. And I can write any other note that I want, upload any other images and click on submit. So if I do that, my second note will be displayed over here. And if I don't tag it to any particular trade, it won't be tagged to any particular trade. If I open it without it being associated with any trade, आपको ऐसे ही खुल जाएगा. If you have attached it to a trade, left side पे टिक करके, and if you click on that, then जो भी आप लोग ट्रेड्स को, जिस ट्रेड्स को भी आप लोग टिक कर चुके हैं, वो ट्रेड्स यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा. So hopefully that is giving you a much clearer idea of how the notes functionality works on the platform, right? So what we will do now is explore the journal part a little bit further. So आपको अगर आपने स्क्रीन पे पर्पल ट्रेड्स, पर्पल डेज दिखाई देगा, तो पर्पल डेज are those days where you placed an order but the order did not go through, the order did not get executed. ऐसे दिन को हम पर्पल ट्रेड्स में टैग करते हैं. लेकिन अगर आपकी स्क्रीन पे रेड या ग्रीन दिख रहा है तो उसका मतलब है कि आपका जो भी ट्रेड है वो एग्जीक्यूटेड ट्रेड ही वहां पे दिख जाएगा, राइट? सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ ईयर व्यू. सो इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ मंथ व्यू. वेयरएवर आई एम होवरिंग माय स्क्रीन अराउंड, सो इफ यू कम हियर, दिस इज कॉल्ड ईयर व्यू. मंथ व्यू में
अगर आप क्लिक करेंगे, let's just go to a month where trades have been taken. Okay, so now let's come to this particular month, that is July of 2023. मंथ व्यू में सिर्फ उस महीने का जो भी हम लोग ट्रेड्स लिया है, तो उन ट्रेड्स को यहाँ पे those trades will be reflected. So as you can see here, 18th, you can see the net profit. You can see the net profit here on 7th, which is somewhere around 189 rupees. Then you can see all the minor losses that have been taken, right? And you can see one major profitability here. So if I scroll my mouse over here, so ये जो 25 आपको दिख रहा है पहले वाले में, यहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उसके बगल में आपको 6 बोल के दिख रहा है, उसका मतलब है पोजीशंस. और इसके बगल में आपको 2 दिख रहा है, उसका मतलब है नोट्स. तो अगर आपको 0 दिख रहा है तो उस दिन में आप इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव नॉट पुट एनी नोट्स. लेकिन अगर यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, सॉरी 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है 2 नोट्स है आपके पास. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड लिस्ट व्यू. तो लिस्ट व्यू पे जाने के बाद आपको you can actually go to any particular month and उस पर्टिकुलर डे का जो भी है यहां पे आपको लिस्ट व्यू मिल जाता है. ठीक है. सो बट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग as traders, the notes that everybody prefers the most, or the view that everybody prefers the most, is the year view, which is the most consolidated view that is possible to see in one single shot. So with that said, I want everybody to, actively take part in this new tool that we have launched, which is the FYERS Journal. And hopefully, all of us can become much, much better as traders. There is one other small thing that we have to note. यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिन पे थोड़ा सा अगर मेरे इफ मनी ऑफ यू हैव लॉग्ड इन फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, आपको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा. अगस्त दिन पे थोड़ा सा जूम इन कीजिए. यहाँ पे 1 के नीचे आपको एक फोल्डेड नोट जैसे दिख रहा है, राइट? उस पर्टिकुलर डे जो कैलेंडर व्यू आपको मिल रहा है उस पे छोटा सा फोल्ड जैसा है बॉटम राइट में. तो अगर फोल्ड है तो इसका मतलब है उस दिन के लिए आपने एक नोट लिया, यू हैव टेकन अ नोट. अगर फोल्ड नहीं है, जैसे सेकंड पे कोई फोल्ड नहीं है, इसका मतलब है उस दिन पे आप लोग ने कोई भी नोट नहीं लिया. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्लैरिफिकेशन. So with that said, this is the robust, FYERS journal that we have launched for all of you. इस फीचर को लॉन्च करने के लिए हम लोगों को बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ा, because a lot of our clients, a lot of our traders were giving in multiple inputs, and हम लोगों को हर एक इनपुट को लेके उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करना पड़ा. So with all that said and done, I sincerely hope that all of you are happy with the launch of FYERS Journal, and I hope that it will kickstart, the year 2024 in a great way for all of you as traders. And it is not something that we are saying just for the sake of saying, but we believe that this is India's best trading journal so far, and no other broker has come this close to launching the most comprehensive trading journal that has been is in and around the market. And we are only going to improve this product going forward by adding more functionalities and more features. And as and when we do that, the communication will come. So with that said, I'm opening the floor to all the question and answers that, all the questions that all of you guys might have. And I'm here to address all the questions for you. So whoever has logged in from Zoom, please go to the Q&A section in Zoom and post your questions. And for the audience who has logged in via our YouTube channel, please feel free to comment on the YouTube channel, and I will be able to help you out there. So let me start off by taking the first question from the audience. Okay. How is the profit and loss calculated? So the profit and loss will be calculated based on the realized profit and loss that you had. So the highest profit that you made becomes the benchmark for the darkest green, and the lowest loss or the highest loss that you made becomes the highest gradient of red that is available for you.
how and where can we access journal? In on the FYERS web portal, you can come to fyers.in and वहां से you can click on the top right button जहां से आपको हर एक ऐप मिलता है, so you can access it from there itself. And another suggestion for you here, uh, or another announcement here, FYERS Journal will very soon be coming to the mobile app too. It is expected to be launched, quite soon. So let's go ahead and wait for that too. Then, is there a possibility to see strategy-wise P&L for options? Okay, so this is an interesting question. Is it possible to see strategy-wise P&L for options? तो इसको explain करने के लिए मुझे थोड़ा सा screen को share करना पड़ेगा. So now, all of you guys can see my screen hopefully, and you're able to see this journal here. Why did we take the notes? Is it to go on that particular day and search for that particular note? For example, यहाँ पे फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अगर कोई भी दिन पे लेट अस से ऑन एनी पर्टिकुलर डे आई वांट टू सी कि on which particular day did I trade fin nifty or on which particular day did I trade options. So the way to find that is very, very easy. I hope you guys can see a search button here, right? Top right पे एक छोटा सा magnifying glass, that is एक search button आपको दिखाई देगा. Search button पे click कीजिए, and in the search button you can actually search for any word that you have entered or any tag that you have entered in your journal. For example, in front of you I took a fin nifty note, right? So मैं fin nifty यहाँ पे type करूंगा. So when I type fin nifty, जो भी trades fin nifty related है, just wherever I've taken notes on fin nifty, so those notes will start reflecting here. So as you can see, fin nifty expiry trading का एक note लिया था मैंने for 1st Jan, that is being reflected here. एक RSI strategy में fin nifty बोल के एक tag लगाया था मैंने यहाँ पे, that is for 3rd Jan trade, that is also visible here. So I can just click on that particular note and I will be taken to a detailed write-up on that particular note that we have made. So this makes it easier for you to search any note you have. So if you have a particular strategy जिसको आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं और आप भूल चुके हैं, आपको सडनली याद आ जाएगा कि या आपको सडनली एक ही शॉट में देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द फिन निफ्टी ट्रेड्स और एक्सपायरी ट्रेड्स दैट आई हैव टेकन. सो जब भी आप एक्सपायरी ट्रेड्स ले रहे हो, टैग्स में सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी बोल के एक टैग लगा दीजिए. सो व्हेन यू वांट टू गो बैक एंड सर्च, हर एक दिन पे आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा. सर्च बटन पे जाके एक्सपायरी ट्रेड एक्सपायरी बोल के टाइप कीजिए. जिस ट्रेड पे भी और जिन ट्रेड्स पे भी आपने एक्सपायरी बोल के लगाया है, ऑल दोस ट्रेड्स विल बिकम विजिबल टू यू. सो दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोर्टल. Instead of uploading, I'd like to see FYERS pull the trading screenshot for the trade as the trade is being taken, the entry and exit. So Rohit, it is already in works, and that will be the next big announcement that we will be making. Can we autofill details of indicators? No, for the moment, no, because we will not know exactly what strategy you are deploying. So that is something that you will have to, take it down by yourself. Can we get the recording? So this is available on YouTube. It is being streamed on YouTube too. So you can always come to our channel on YouTube, go to the live section, and live section में आपको, you'll be able to find this particular webinar. Is there any way to search with tags? Yes, Chandan. I hope that I've clarified that for you. Thanks everyone for all of you who are saying that this is a much better journal than what is available in the market. It's much appreciated. How many days will the notes be available once we have created the notes? Forever. Is this a third-party tool? No. This is a tool that has been designed by the FYERS team in-house. This is our tool. I can see a lot of thanks coming in. It's duly appreciated. Okay, so for those of you who are asking about how to monitor stop losses and stuff,
every time you take a trade, in the tags, put a tag like stop loss. So if you put a tag like stop loss and then go to the search functionality and type stop loss, आपका जो भी trades में stop loss trigger हुआ है, specifically those trades, it will be reflected right over there. So now going to some of the questions that our YouTube audience has. So the kill switch is coming soon. And journal will be available on the app. The notes can be accessed only by the user and cannot be accessed by anybody else who's not associated with the user or who has the username password of the user, if that is what all of you guys mean. Does the journal include P&L from all the positions of the same stock? I do not know what that question means. I honestly don't know what that question means. Maybe if you could frame it better, I'll be able to take it. But अगर आपका question ये है कि क्या हर एक trade log होता है? Yes, because the onus lies on you as the user to basically find out which trades you want to tag, or do you want to put a note for the entire day and tag it or place the note accordingly. Right. So with all that said and done, I believe most of the questions surrounding FYERS journal has been addressed. And if you guys have any other questions, I hope all of you know where to reach out to us. We are available directly on FYERS community. So if you're not aware of FYERS community, the process is very simple. मैं आपको दिखा दूंगा as to how to access it. So all you have to do is come to Google and type FYERS community. Click on the first link that comes through. And over here, you can ask any questions. I am also available on FYERS community. You can also tag me as Pranav_Shandilia, and you can post your question over here, and I will be able to take up your questions. But rest assured, you do not have to necessarily search for me. All the entire team will be available on FYERS community. Feel free to come over there and post your question if it's an elaborate question. If you're facing any sort of issues, feel free to come over there and talk about it. And myself and my team will be available at your disposal, and we'll ensure that all of your queries get addressed instantly. So with all that said and done, thanks everyone for taking your time out and coming over to this particular session. I wish you all the best in your trading journey in the year 2024, and hopefully journal plays a key pivotal role in making this dream a reality for all of you guys. So thanks a lot, everyone. Take care. Have a great time. Bye.